स्क्रीन विजिबल नहीं है? Please confirm this thing once again, that are you getting my screen or not? Is my screen is visible or not? Okay, fine. So let's continue. Although we have covered one of the topic with our group, I think so, group B students, okay? But let's repeat the whole topic again. See students, here what we are going to do. In this chapter, we have three things: hills, playbacks, and sponsor users, okay? Although it's very easy, you just have to understand that what is hills, what is playback, and what is sponsor users. Rest stay aligned by regularly exchanging feedback. Sponsor users guide users into the work to stay true ways. Okay. To the conventional design thinking approach, what are those practices? They are hills, playbacks, and sponsor users. So IBM design thinking sponsors uh, three different scaling practices. They are hills, playbacks, and further sponsor users. Now, these approaches to help extend design thinking to the complex problem means, I can say that whatever the problems you have, to find the result of those problems, we can have these three things. We can use these three things, and teams a global organization like IBM has. Moreover, many of the MNCs are using these three things, okay, like hills, playback, sponsor users. Many of the companies, not including IBM, I can say, many of the further, like your TCS, like your further, I can say Oracle, rest of the I can say Amazon, they all are using your design thinking approach, okay, to solve their issues. Fine? Clear? Yes, इतना clear है? Then let's continue. These practices enable our teams to gain more focus and alignment, and ultimately to develop truly great product. Of course, using these features, we can push our team to gain focus, to align on the particular path, on the correct path, and to develop truly great product, to develop a I can say fruitful product. Okay. Now see, in practice, complex problems often call for complex teams. Of course, whenever you have a complex problems, you are going to have your complex teams. Okay, and complex teams can be challenged to manage, and of course, they are being challenged out to manage the problem. Project management frameworks can help manage complexity. If you have to manage the complexity of your any of the project, we have our project management framework. We have our project management team, which is responsible to manage your complexity. Okay, they are able to divide your teams into squads. Okay, I can say work streams, or I can say sprints or phases. So your project management is going to divide your team into four parts, means into a different teams. That particular team can be called as squads, can be called as work streams, can be called as sprints, and can be called as phases. Fine.
We might even standardize around the common process for teams to follow. And whatever the teams we have, they all are allowed to follow the same protocols, same rules. Fine. No matter how we organize a team, delivering great user outcomes requires us to stay focused and aligned on what matters to the user. It doesn't matter that how you are organizing your team. Either you are organizing a team into your equal number of parts, means let's suppose you are dividing your teammates into your 3 teams further. Each and every team must include five members. Or either you can do one thing, you are just dividing your team into 2 parts, and one of the team has 6 members and one of the team has your rest of the members. So it doesn't matter, are you dividing that team into the proper means dividing a team into equal parts or not. So it doesn't matter that how you are organizing. What thing matters, the thing that matters is your outcome, that it should be up to the point, it should be relevant, it should be up to the requirement as per the user. Okay. Next है, the keys are 3 most important techniques for diverse teams to reflect together as we move from idea to outcome. Whenever we are just starting to get the output, to get the result of that particular problem, that particular software. Let's suppose we are building a software. So from idea to outcome means from the starting phase, from the requirement gathering till maintenance, what you have to do, you can use these 3 most important techniques. Which one? You can use your hills, you can use your playbacks, and you can use your sponsor users. Okay. So they can help you all to get the proper outcome. They help us to get aligned, and stay in touch with real world needs. Fine. Even when we are deep in the work, although we are in a week deep in the work, still they assign us these. If we are using hills, then I can say, yeah, playbacks and sponsor users. Using these 3 techniques, we are able to get a result. So let's continue with the very first one, that is hills. So see students, if I talk about hills, hills are always a statement. Hills क्या होंगे? Hills are always statements. ये हमारे पास हमेशा एक statement होती है, ठीक है? Hills are the statement of intent written as meaningful user outcome. जिसको हमेशा हम एक user outcome means meaningful user outcome के basis पे ही लिखते हैं. हिल्स में अब होता क्या है, इट्स टेल अस कि आपको कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है, कि आपको फर्स्ट मॉड्यूल ये बनाना है, सेकंड मॉड्यूल ये बनाना है, थर्ड मॉड्यूल ये बनाना है. फर्स्ट मॉड्यूल में यही सारी चीजें होनी चाहिए, सेकंड मॉड्यूल में ये सब चीजें होनी चाहिए, थर्ड मॉड्यूल नॉट विजिबल. इज इट विद एवरीवन? How many of you are not getting my screen? My voice is also low. Even I'm trying to speak very high. Just let me refresh 1 second.
Is it fine now? Yes. Is it fine now or not? Okay. Amrit, what about my voice? Is it clearly audible? Okay. So let's continue. Here we are talking about hills. So hills are the statement of intent written as meaningful user outcomes. Okay. So I can say that hills are just like a statement. Okay. And it is always having a meaningful outcome or meaningful meaning. They tell us where to go, not how to get there, empowering teams to explore breakthrough ideas without losing sight of code. Means using the hills, using these statements, we are able to see that what are the points that we have to keep focus on our focus. And I can say that it also tells us that this is a particular path that you have to select. Okay, like let's suppose we have to, a path can be like your module designing. First you have to design your login module, then you have to first you have to design your registration module, then you have to design your login module, then you can design your logout module. So these are the three different modules. So the statement which is telling you that you have to continue with like this like आपके steps पहले आपका registration होना चाहिए, फिर login होना चाहिए, फिर logout होना चाहिए. इस तरीके से आप लोगों को अपना पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है. तो जो आप लोगों को ये स्टेप्स बताएंगे that are called hills. Okay, they tell us where to go and not how to get there. मीन्स आपको वहाँ कैसे आपको वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, आपको वहाँ पे क्या चीज नहीं परफॉर्म करनी है, ये सारी चीजें आप लोगों को हिल्स में बताएंगे. ओके, इट अलाइन अस ऑन द इंटेंट. मीन्स it is always focus on the great outcome. Fine. Next है, by making these goals explicit and evaluating them regularly, we align teams around a single shared mission. Or using the concept of hills, what you can do, you can keep your teams, multiple teams on a single track. Yes, ये आप लोगों का एक पर्टिकुलर मिशन है जो आप सबको मिलकर, शेयर्ड मिशन है, आप सब में शेयर्ड हुआ है, आप लोगों को सबको मिलकर ये अचीव करना है. ठीक है. Next we have three hills, one foundation. You can do anything but you can't do everything. Of course we know very well that we can do anything but we can't do everything. Hills should reflect an investment in the most valuable outcome of the user and the most important differentiators for your organizations. Of course, what we are getting using hills always reflect for our investment. Means whatever the process we are performing, it is going to invest in it. It is going to reflect over it. How? Because it is going to make visible the valuable outcomes. Whatever the valuable outcomes you have, it is going to make them visible. And the most important differentiators of your organization. And moreover, he will start differentiating your organization. Like let's suppose if I'm just trying to give an idea, okay? Similarly, I'm having my one of the colleague also, he's also trying to give an idea. So from both of them, which idea is the perfect one? Using hills, share also. Fine. Next we have getting sync, getting synchronization. Here's the truth. One complex project, things don't always go as planned. Of course, we know very well that whatever the plans we have, even in our normal life, even in our I can say organizational life, even in our business life, okay, we whatever the plans we have, they are not always execute as it is. Of course, उसमें कुछ ना कुछ ups and downs आते हैं. Okay, the never-ending stream of features, requests, and technical roadblocks threaten to derail progress, delay releases, and throw even the healthiest team out of alignment. Of course, students, you know very well when you are getting something like let's suppose आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिल रहा है. So वो सॉफ्टवेयर हमेशा हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है अप टू द रिक्वायरमेंट्स कभी भी अचीव नहीं होता. ठीक है, तो हम लोगों की जो भी रिक्वेस्ट है वो नेवर एंडिंग होगी. सो यू कैन से दैट अ नेवर एंडिंग स्ट्रीम ऑफ फीचर रिक्वेस्ट आर फ्रॉम द यूजर साइड. टेक्निकल रोड ब्लॉक्स, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मेरे पास सही चल रहा है लेकिन मेरे सेकंड पार्टनर के पास सही नहीं चल रहा, थर्ड पार्टनर के पास सही नहीं चल रहा, फोर्थ पार्टनर के पास तो
चल रहा है लेकिन कुछ मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, ठीक है, तो दैट यू कैन से दैट इज अ टेक्निकल रोड ब्लॉक्स. Okay, and due to those technical roadblocks we always get a, I can say, a bad dream that it may derail our progress, it may delay our project. Okay, whatever the release dates we have, if we are not able to release our project over that particular date, it will be effective for us. Okay, even sometimes if you are working in the correct path, it always try to remove you, to get to disrupt you related to that particular path. Okay, it always try to just, I can say, break your alignment. Okay, despite these uncertainties, how can a team stay true to the project intent? Still these things are happening with the project, with the project team. So we have to keep this thing in our mind कि still अगर ये सब कुछ activities हो रही है तो भी उन्हें कैसे एक particular platform पे रखा जाए. So for that we have hills. Hills communicate our intent for the project with clarity and flexibility. Okay. So जो हम लोगों ने यहाँ पे problem discuss की, इस problem से related we have our clarity and complexity. हम अपनी clarity और complexity concepts use करेंगे hills के. Okay. So hills में हमारे पास clarity और complexity के दो protocols होते हैं. We are going to use them. Okay. They frame problems are intended user outcomes, not predetermined. Okay. वो क्या फ्रेम करते हैं? दे फ्रेम दैट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं दैट आर यूजर आउटकम्स. ओके, प्रीडिफाइंड नहीं है, प्रीडिटरमाइंड नहीं है, दैट आर टोटली यूजर आउटकम्स. ओके, एम्पावरिंग टीम्स टू डिस्कवर ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस. एंड फर्दर अगर वो यूजर आउटकम है, अगर वो प्रीडिटरमाइंड नहीं है, यूजर आउटकम है, मींस एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो सारी प्रॉब्लम्स आई है, ऑफ कोर्स, तो उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक थ्रू देम. ओके, we always try to find a solution related to them. So we will do that thing. Then after that they help us to keep our eye on the prize even despite the many challenges they stand in our way. Okay, so even we break through our solution, we break through our problem, हम अपनी problem को break through करेंगे, solution find करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपना जो particular problem है उसको up to the point लेकर आ सके, उसको totally जो भी हमारी सॉल्यूशंस है, मींस जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाए, सो दैट वी कैन अचीव आवर लास्ट टारगेट, फाइनल टारगेट. ओके, सो इसमें हम लोग क्या करते हैं हिल्स में? सी स्टूडेंट्स, हिल्स में हम लोग अपने मेनली कंसीडर करते हैं तीन एलिमेंट्स. ओके, वी हैव आवर थ्री एलिमेंट्स ओवर हिल्स दैट आर हु, व्हाट एंड वाउ. मेनली हम लोग वाउ फैक्टर को अचीव करते हैं. वाउ फैक्टर अचीव करने का मतलब है कि आप लोग जो भी सॉल्यूशन निकाल रहे हो अपनी प्रॉब्लम का, इट शुड बी अ वर्थ, इट शुड हैव सम वर्थ, वी कैन से दैट इट्स वाओ. ओके, सो दैट वाओ फैक्टर अचीव करने के लिए वी हैव आवर एक्सरसाइज क्राफ्टिंग अ हिल. अब क्राफ्टिंग अ हिल में आप लोग करते क्या हो? ये तीन ही फैक्टर्स आप लोगों को निकालने होते, तीन एलिमेंट्स, हु, व्हाट एंड वाओ. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट अ हिल. Start with the user you want to serve. Next, specify the outcome you want to enable them to achieve and differentiate it that will make your solution worth their while. हम लोग क्या करेंगे इसमें? हम लोग तीन टीम्स बनाएंगे. ओके, तीन टीम्स किस तरीके से बनाते हैं? फर्स्ट टीम आप लोग स्पेसिफाई करेगी द आउटकम दैट यू वांट टू इनेबल टू अचीव. जो भी आउटकम यू आर थिंकिंग इट शुड बी अचीव्ड, वो एक टीम बनाएगी. सेकेंड टीम क्या बनाएगी? सेकेंड टीम आप बनाएगी कि डिफरेंशिएटर्स की टीम होगी, दैट विल मेक योर सॉल्यूशन वर्थ देयर व्हाइल. मींस आपका जो भी सॉल्यूशन आप लोग निकालोगे, फर्स्ट टीम जो भी सॉल्यूशन निकालेगी उस सॉल्यूशन को फर्दर डिफरेंशिएट. ऐसा तो है नहीं कि एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, नो. टीम वन विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट सॉल्यूशंस. So based on those solutions, what you will do, you will try to differentiate them. Okay, so that which you are able to find that which one is the best. Okay, now next we have good hill is implementation agnostic. It should specify that specify what users are trying to accomplish, not a tool they will use to do it. Okay, so using the good hill concepts we will see that what we can accomplish, what are the targets that that particular targets we can achieve. So if you read your hill back and it feels like it already describes the specific implementation, take a step back and try again. अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप लोगों ने जो स्टेप्स लिए हैं
वो स्टेप्स अप टू द पॉइंट नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट अगेन. फाइन, लेट्स सी हु व्हाट एंड वाउ है क्या. इफ आई टॉक अबाउट हु आर योर यूजर्स. हु में हम लोग लिखेंगे कि आपके यूजर्स कौन से, आपकी टीम्स कौन सी है. मेक इट क्लियर हु यू एम टू सर्व एंड हु यू डोंट. इस चीज में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि आपके यूजर्स कौन है, उन पर्टिकुलर यूजर्स का काम क्या है. ठीक है, what they are mainly aim to serve, उन लोगों का मेन टारगेट क्या है, और टारगेट अचीव करने के लिए उन लोगों को क्या क्या वर्क करना है, क्या क्या वर्क नहीं करना. ये दोनों चीजें आपके हु में आती है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट्स द नीड दे आर ट्राइंग टू मीट. व्हाट्स में है आपके पास कि जो आप लोगों के यूजर्स हैं हु के, जो भी आप लोगों का एक टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. लाइक फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल पॉइंट है, देन वी हैव लास्ट स्टेप. हु में आप ये बताते हो कि हाँ जी उन लोगों को ये सब कुछ अचीव करना है. अब करने के टाइम पे जो भी वो लोग अपने स्टेप्स अचीव मींस अपना टारगेट अचीव करने के लिए जो भी अपने स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, उन स्टेप्स पे उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप लिखोगे व्हाट में. ठीक है, एंड लास्ट इज वाव फैक्टर. वाव फैक्टर में हम देखते हैं क्या है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट योर कंपिटिटर्स, मींस हाउ विल यू मेजर सक्सेस. मीन्स कि आप लोग वाव फैक्टर में पहली बात तो अपने जो भी रिजल्ट्स हैं, वी नो वेरी वेल दैट if we are trying to find any of the thing, we are not going to work with only one result. We will try कि उसके एटलीस्ट 2 या 3 रिजल्ट्स आए. सो जो भी रिजल्ट्स निकलेंगे आप उनको डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द सक्सेस रेट कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, तीनों जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस है, तीनों चारों सॉल्यूशंस, उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट सक्सेस रेट किसका है. जिसका हाईएस्ट सक्सेस रेट होगा आप वो वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन लोगे और उस पर फर्दर काम करोगे, या फिर यू कैन से यू विल ट्राई टू सबमिट देम. फाइन, इज इट क्लियर? यस, टेल मी फास्ट. इतना क्लियर हो गया? ये सब है आपके पास आपके हिल्स में. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट देन वी हैव प्लेबैक्स. स्टूडेंट्स प्लेबैक में एक्चुअली क्या होता है, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट. ओके, हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, चाहे आप लोग के टेस्टर्स हैं, आप लोग के डेवलपर्स हैं, आप लोग का क्लाइंट है, आप लोग सबसे फीडबैक लोगे. ठीक है, पर्टिकुलर फीडबैक जो आप लोग लेते रहोगे अगेन एंड अगेन, छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे, पूरे सिस्टम पे, those playbacks are known as those feedbacks are known as playbacks. So see, playbacks are regular check-ins that bring user, stakeholder and team together to tell stories and exchange feedback. Clear? आप लोग क्या करोगे, अपनी एक मीटिंग वगैरह कंडक्ट करोगे यूजर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ. ओके, एंड यू विल ट्राई टू I can say that you will try to just find to get their feedbacks. जो भी एक दूसरे के feedbacks है. Let's suppose I am there, 3 more persons are there. So मैं क्या करूँगी, मैं इस पूरे प्रोसेस में ट्राई करूँगी कि जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक जस्ट 1 सेकेंड, लाइक जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या फीडबैक हो सकते हैं, उन फीडबैक्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की कोशिश करूंगी. फाइन, दे अलाउ अस टू मेजर प्रोग्रेस ऑन द रेगुलर बेसिस. फाइन, while uncovering and addressing any misalignment that may exist. क्लियर? हम लोग क्या करेंगे प्लेबैक्स के कंसेप्ट में, दे अलाउ अस टू मेजर प्रोग्रेस, और जो भी फीडबैक है उन फीडबैक के बेसिस पे हम लोग अपने प्रोग्रेस को चेक करेंगे कि हमारी प्रोग्रेस कितनी है रेगुलर बेसिस पे, while uncovering and addressing any misalignment that may exist. ताकि जो भी अगर हमारे पास कोई एक मिसअलाइनमेंट रह गई है, या फिर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं निकाला है, या कोई भी ऐसा पाथ है या कोई भी ऐसा टास्क है जिसकी वजह से हम लोगों को इश्यू हो सकता है, वो हम लोग को मिसलीड कर सकता है, उसको हम एट अ टाइम ही उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एट अ टाइम ही हम लोग रिमूव कर दें. ठीक है, तो ये प्लेबैक्स में होता है. Here we have stay focused on user outcomes. In the playback, user are the stars to show, okay, stars of a show.
Give them a face and introduce them by a name. Of course, what happening? Like आप लोगों ने देखा होगा brainstorming sessions होते हैं, ठीक है? आप लोग जैसे हम लोग group discussions करते थे, आप लोग भी यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी ग्रुप डिस्कशंस करते होंगे, ठीक है? सिमिलरली हम लोग ग्रुप डिस्कशंस करते हैं जब हम लोग को कोई भी अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो ग्रुप डिस्कशंस में क्या होता है, लाइक अगर कुछ भी मेंबर्स बाहर के हैं तो इट इज द फर्स्ट स्टेप कि हम लोग सबको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. ऑफ कोर्स जब आप लोगों के जीडी राउंड्स होते हैं, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप लोगों के जीडी राउंड्स हैं, तो आप जीडी राउंड्स में भी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक दूसरे के साथ. सिमिलरली हियर वी हैव कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों की टीम है, पूरी टीम जो हम लोगों की लाइक लेट्स सपोज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कोई मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी मीटिंग में टीम है हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हो सकता है उस टीम के मेंबर्स आपके शेयर होल्डर्स हो, आपके स्टेक होल्डर्स हो, आपके यूजर हो या फिर मीन्स क्लाइंट हो, और हो सकता है उस टीम में आपने बाहर से पर्सन भी बुलाए हो फॉर द पॉइंट्स, मीन्स फॉर द फॉर गेटिंग मोर आइडियाज, फॉर गेटिंग मोर फीडबैक्स. हो सकता है आपने पैसे देकर आपने बाहर से पर्सन बुलाए हो कि आओ लेट्स जॉइन अस, ट्राई टू गिव योर फीडबैक, वी विल पे फॉर यू, ओके, फॉर दिस वी विल पे टू यू. सो ये सब भी होता है जब आप लोगों के पास कोई मीटिंग्स कंडक्ट होती है किसी भी हायर लेवल में, एमएनसीज में, कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड. ओके, सो सेम थिंग यहाँ पर है कि हम लोग पहले उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं. फाइन. ब्रिंग योर ऑडियंस टू द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इट्स लाइक टू बी अ यूजर. इंट्रोडक्शन के टाइम पे सिर्फ नेम इंट्रोडक्शन नहीं होता है, वी हैव टू डिफाइन कि यस जो भी पर्सन्स है दे आर फ्रॉम द विच बैकग्राउंड, व्हाट आर देयर एक्सपर्टीज, what kind of experience they have. So we have to discuss all such things. The more empathy your audience can have for users, the more valuable their feedback will be. Of course, जितनी empathy आपके आपके लिए audience की होगी, means आपकी जो audience है, आपके audience के लिए आपकी empathy होगी, उतने ही ज्यादा valuable feedbacks होंगे. Because let's suppose मैं कोई meeting conduct करवा रही हूँ, कोई GD round करवा रही हूँ, अगर मैं उसमें क्या कर रही हूँ, आप लोगों को पार्ट ही नहीं लेने दे रही हूँ, आप लोगों के इंटरेस्ट से बाहर ही है टॉपिक, तो कोई फायदा नहीं. बिकॉज आप लोग उसमें क्या दोगे, या तो अपने फीडबैक्स नहीं दोगे, अगर अपने फीडबैक दिए भी तो दे आर नॉट वैल्यूएबल. सो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस होती है वो एम्पैथी होनी चाहिए, मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होनी चाहिए, सो दैट वो अपने वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं. ओके, प्लेबैक्स अकर एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. हमारा जो प्लेबैक है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे अकर होता है. फर्स्ट वन इज योर पर्सोना एंड सिनेरियो डेफिनेशन. सेकंड वन इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, दैट इज एमवीपी डेफिनेशन. वी विल डिस्कस दैट एमवीपी क्या होता है, इंक्लूडिंग द यूजर एक्सपीरियंस. एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट डिलीवरी ऑफ कंप्लीटेड स्टोरीज. सो लेट्स सी, आप लोगों के पास जो प्लेबैक्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे अकर हो रहे हैं, हम ये सारे डिस्कस करेंगे आगे. फर्स्ट वन वी हैव द वैल्यूएबल ऑफ प्लेबैक्स. पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्लेबैक्स है उसकी वैल्यू क्या है. Playback help ensure that a team is aligned on the personas that will use the service and the scenarios that will be included to satisfy the MVP. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी पर्सोनास क्या होते हैं. स्टूडेंट्स टेल मी फास्ट. हम लोगों ने पर्सोनास डिस्कस किए थे. हाँ जी बताइए पर्सोनास क्या होता है. एनीवन, पर्सोनास क्या है. हाँ जी, anyone of you, what is persona? Around 4 or 5 times persona डिस्कस किया था मैंने. Tell me fast. User experience. Anyone else? What is the meaning of persona? "76 participants are there and only one reply. What about rest of the 75? Tell me fast, क्या है persona?
यस अभिजीत जोशी. Bhanu, idea to design for a particular person. Yes, Abhijit, I'm asking what is the meaning of persona? Idea to design for the particular person or particular problem. Fine. Idea to design for the particular person. Okay. Tell me fast. What about other students? Persona क्या है? Let's suppose हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो भी हम लोग आइडियाज जनरेट करेंगे यूजर के एक्सपीरियंस पे. फाइन. अगेन आई एम सेइंग, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए यूजर बेस पे, प्रोटोटाइप और ब्लूप्रिंट, राइट, यूजर एक्सपीरियंस पे, यूजर एक्सपीरियंस बेस पे जो भी हम लोग स्टेप्स लेंगे, ठीक है, जो भी हम आइडियाज लेंगे, दोज आर कॉल्ड पर्सोनास. तो हम लोग प्लेबैक में करते क्या? प्लेबैक हेल्प इंश्योर द टीम इज अलाइंड ऑन द पर्सोनास. मींस जो भी आप लोगों ने अपने स्टेप्स लिए हैं, आप लोगों की टीम उसी पे ही फोकस कर रही होगी, ठीक है. दैट विल यूज द सर्विस. मींस जो भी आप लोगों ने स्टेप्स सोचे हैं वही स्टेप्स वो लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे. एंड द सिनेरियोज दैट विल बी इंक्लूडेड टू सेटिस्फाई द एमवीपी. और जो भी उन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं दैट मस्ट बी अप टू द पॉइंट, ताकि एमवीपी को सेटिस्फाई कर सको. एमवीपी क्या है? We will discuss MVP here. Okay. So we have one more thing here, that playback in practice. Effective playbacks incorporate these practices: being concise, scheduling enough time to listen the stakeholder feedback, focusing on the value of the scenario rather than technical implementation details. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के प्लेबैक्स में हमेशा प्रैक्टिस की जाती है. दैट बीइंग कंसाइज, शेड्यूलिंग इनफ टाइम टू लिसन टू स्टेक होल्डर फीडबैक. जो भी आप लोगों के स्टेक होल्डर्स होते हैं उन स्टेक होल्डर के फीडबैक को प्रॉपरली लिसन करना. मींस इट शुड बी अ गुड लिसनर. फाइन. और हमें फोकस करना होता है, फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ द सिनेरियो. जो भी सिनेरियो है उसकी वैल्यू पे फोकस करना रेदर देन अ टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स. क्लियर? Let's see what is MVP now. MVP is your minimum value product. Minimum value product की अगर मैं बात करूं तो let's see क्या है ये. When playbacks are the part of your MVP definition, the goal is to align the entire team around the scenarios that are part of MVP and user interface to achieve those goals. Fine. आप लोग जब भी अपने प्लेबैक्स को प्ले करते हो, अपने प्लेबैक्स के साथ कंटिन्यू करते हो, यू ऑलवेज हैव टू कंटिन्यू विद योर एमवीपी. एमवीपी मींस मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट. ओके. इसमें मेन गोल क्या है? द गोल इज टू अलाइन द एंटायर टीम अराउंड द सिनेरियोज. इसका मेन गोल यही है कि जो भी जितनी भी आपके पास टीम्स हैं, चाहे आपके पास छोटी टीम्स हो, लाइक you have only 2 or 3 teams, or either you are having an n number of teams, like I can say 50 to 60 teams. कितने भी number of teams हो, that should be on the correct path, that should be on the correct scenario. Means they should be working on the proper problem. जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसी पे वो अपना वर्क करें और अपना फोकस रखें. दैट इज योर एमवीपी, मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट. ओके. और वो जो अपना फोकस रखेगी दैट शुड बी ऑन द यूजर इंटरफेस, यूआई के थ्रू, मींस यूजर इंटरफेस के थ्रू आल्सो. Next we have the great deal to design work must occur before the playback of the MVP and the user experience. जो भी आप लोगों ने अपनी प्रॉपरली जो डील्स हैं आप लोगों की किसी भी डिजाइन को कंटिन्यू करने के लिए, द ग्रेट डील ऑफ डिजाइनिंग वर्क मस्ट अकर बिफोर द प्लेबैक ऑफ एमवीपी. मींस आप लोगों को जो भी आप लोगों ने, सिंपल सी बात करूं तो टेक्निक्स अप्लाई करनी है, वो टेक्निक्स एमवीपी से पहले, एमवीपी को अप्लाई करने से पहले ही आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हाँ जी हमने यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारी टेक्निक्स हम लोगों ने अप्लाई करवानी है. ठीक है. The team must address open issues around the market direction. Whenever you are having your group discussions with the team under your MVP concept, you should focus
on some of the things like team must address open issues around the market direction. जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है, लाइक लेट्स सपोज कि हाँ जी ये वाला करंट इशू जो है मार्केट में चल रहा है, या फिर आप ये वाला सॉल्यूशन यूज करने जा रहे हो, पर ये सॉल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप लोग को इन सब बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज क्या हुआ, मैंने यूपीआई का कंसेप्ट बनाया, ठीक है, और यूपीआई का कंसेप्ट मैंने मार्केट में रिलीज कर दिया। मैं जब को मार्केट में रिलीज करने लगी हूँ, ऑलरेडी यूपीआई का कोई कंसेप्ट है, लेट्स सपोज मैं गूगल पे यूज कर रही हूँ, गूगल पे विद ओनली यूपीआई, ओके, और मैं भीम यूपीआई की बात करूँ तो ऑलरेडी मार्केट में भीम यूपीआई है, तो क्या होगा, जो उसके ड्रॉबैक्स हैं मुझे उनको अपने प्रोजेक्ट में कवर करना है, मींस उसके ड्रॉबैक्स को मुझे अपने प्रोजेक्ट का एडवांटेज बनाना है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करते हो अंडर द फेज ऑफ योर एमवीपी, क्लियर। द टीम मस्ट एड्रेस ओपन इश्यूज, और उन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों को उन जो भी आप लोगों के इश्यूज है उन सारे इश्यूज को ओपन करना पड़ेगा विद इन योर टीम, means you can't hide anything from your team, you have to open each and everything from, I can say, from A to Z things, whatever you have from A to Z, whatever the things you have, whatever the issues, whatever the positive points, whatever the negative points that you have, you should just have to discuss with your team, fine. And whenever you are going with your MVP concept, your team is going to represent a storyboards and the wireframes to obtain the agreement of MVP. वो क्या क्या डिस्कस करेंगे, वो डिस्प्ले करेंगे आप लोगों के स्टोरी बोर्ड्स और वायरफ्रेम्स। स्टोरी बोर्ड्स क्या होता है, जस्ट लेट मी शो यू स्टोरी बोर्ड्स। इस तरीके का स्टोरी बोर्ड होता है, ठीक है, स्टोरी बोर्ड होता है यहाँ पे हमारे पास। तो इस केस में आप लोग क्या डिस्कस, क्या विजुअलाइज करोगे, क्या डिस्प्ले करोगे, विजिबल क्या चीजें करोगे, स्टोरी बोर्ड्स, फाइन। और वायरफ्रेम्स क्या आती है, द वायरफ्रेम्स आर रीविजिटेड ऑन द डेवलपमेंट प्लेबैक्स वेयर दे कंटिन्यू टू रिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड, मींस आप लोगों के पास जो पुराने प्रॉब्लम्स थे, आप लोगों के पास जो पुराने डिसएडवांटेजेस थे, उन डिसएडवांटेजेस को आपने कैसे कवर किया, वो चीजें आप लोग ऐड ऑन करते हो अपने वायरफ्रेम्स में। उन डिसएडवांटेजेस को कैसे आप लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट बनाया, कैसे आपने उसको एक एडवांटेज बनाया, वो सारी चीजें आप कहाँ ऐड ऑन करते हो अपने वायरफ्रेम्स में, फाइन। Then after that we have development playbacks and continuous delivery. Of course, you know very well that you are from the cloud background, that each and every project must be having its continuous delivery, okay? क्योंकि अगर continuous delivery को हमने ब्रेक लगा दिया तो हो सकता है वो इफेक्टिव ना रहे। लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप लोगों के पास आप लोगों की कोल्ड ड्रिंक्स बनती है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आप लोगों की कोल्ड ड्रिंक्स जो अभी बन रही है, लेट्स सपोज आई एम वर्किंग इन माय फैंटा कंपनी, ओके, तो अगर मैं फैंटा के प्रोडक्ट्स की जो भी उनकी प्रोडक्शन है, उनकी प्रोडक्शन को ऑल ओवर द इंडिया में रोक दो, ओके, और मैं बाहर से एक्सपोर्ट भी ना करूं, तो क्या वो कंटिन्यूस डिलीवरी के अंडर रहेगी? नो। और क्या होगा, पॉजिटिव तो छोड़ दो, उल्टा हमारे साथ क्या होगा, नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज हमारा बिजनेस लोअर डाउन हो जाएगा। सो whatever the products you have, whatever the projects on the projects you are using, if they are should be going to use on a regular basis, on a daily basis, then they must be inside of continuous delivery. Let's suppose वही अगर मैं बात करूँ ओला उबर की, normally persons are using Ola and Uber cabs. So अगर ओला और उबर कैब्स अपनी कंटिन्यूस डिलीवरी में 1 आवर का भी ब्रेक लगाते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। कैसे? बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा उन लोगों को, ओके। So your project should be on the continuous delivery, fine. और continuous delivery based होगा MVP पे ही। So we will continue with this point in our 6th lecture. We have 6 lecture today. Am I right? हमारा आज 6th lecture है ना? 5th है या 6th है? I think so 6th है। ओके तो जो हम लोगों के पॉइंट्स रहते हैं, वी विल कंटिन्यू विद दैट इन अ 6th लेक्चर एंड विल ट्राई टू कवर ऑल सच थिंग्स। बहुत इजी आगे का, थ्योरी ये सारी,
हम सिर्फ एक बार थ्योरी को go through करेंगे सारा. We will cover it in our next chapter. Sorry, in our next lecture. Rest you all can leave now, and the group who's having the lab with me, they can join the lab. Thank you.